everyone, I'm Neha from ixamBee. Today in this video, I'll be discussing about General Insurance Corporation of India Specialist Officer-Legal 2021 Syllabus and Strategy. There is an important announcement from the GIC that the exam which was going to be conducted on 9th of May 2021 has been postponed. So students, we have more time to prepare, so let's gear up for our preparation. For this, we'll be first looking at the exam pattern. The exam is in three parts. Part A, which is related to technical or professional knowledge, इस सेक्शन में क्वेश्चंस लीगल स्ट्रीम से आएंगे. 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस होंगे. पार्ट बी ऑब्जेक्टिव होगा. अगेन इसमें रीजनिंग से 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे. इंग्लिश लैंग्वेज में जिसमें एम्फेसिस होगा ग्रामर और वोकैबुलरी पे 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चंस होंगे. जनरल अवेयरनेस जो कि वेरी कॉमन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, उससे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस होंगे. लास्टली न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी जिसमें 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चंस होंगे. Lastly, we have part C, descriptive English, जिसमें questions related to essay, précis and comprehension होगा. 3 questions of 30 marks होंगे. So the total marks for the exam is 150 and the total number of questions is 123. Looking at the total time for the exam, 150 minutes तो है total time है exam का, जिसमें part A objective 30 minutes का है, part B objective 60 minutes का है, lastly part C descriptive English 60 minutes का है. द पेपर इज़ बाईलिंगुअल एज इन इंग्लिश या हिंदी, हम कोई भी मीडियम चूज़ कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए, एक्सेप्ट जो पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है दैट हैज़ टू बी अटेम्प्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. There is a negative marking in the exam in the objective section of 1/4 of the marks. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है ऑनलाइन मोड से होगा. ऑनलाइन मोड का मतलब है कि क्वेश्चंस डिस्प्ले होंगे हमारे स्क्रीन पे और हमें आंसर्स टाइप करने हैं कीबोर्ड यूज़ करके इंग्लिश में. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए होगा वो 60% जनरल और ओबीसी के लिए और 50% SC ST के लिए. ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू एंड द टोटल मार्क्स फॉर दिस विल बी 200. अगेन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा इसके लिए वो 60% फॉर जनरल एंड ओबीसी और 50% फॉर SC ST. Looking at the cutoff for 2019, we can see that in the legal stream, the cutoff was like for the SC, it was 64.75, for OBC 71.5, for general 70.25. For the ST and EWS, it was NA as in not applicable because the candidates, none of them qualified for the online test. Now the most important part for our exam comes the time to plan. We need to plan for our exam. The goal we have of clearing the exam, for that we need to prepare. So we need to have a plan, a strategy, and we need to act on it. So to achieve this goal, we have to be aware of some of the important things. Like सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए, जो मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी, जो GIC ने प्रोवाइड किया है सिलेबस. देन वी हैव टू मेक अ स्टडी प्लान बेस्ड ऑन दैट सिलेबस. आफ्टर द सिलेबस और स्टडी प्लान हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं as many as we can because it will give us a good practice. And lastly, we should keep on revising our subjects. जो सिलेबस GIC ने लीगल स्ट्रीम के लिए प्रोवाइड किया है उसमें सबसे पहले है इंश्योरेंस लॉज एंड रेगुलेशंस. ऑब्वियसली क्योंकि ये एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इसमें इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट से IRDA एक्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट एक्सेट्रा. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ये बहुत बेसिक और बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं या फिर हमने अपने LLB में भी पढ़ा है. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, CPC, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, IPC, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. Then the miscellaneous law, in which we need to study Companies Act, Labor Law, Partnership Act, Insolvency and Bankruptcy Code, Intellectual Property Rights and few more. Lastly, we have legal language and legal current affairs. Since this is a legal specialist officer exam, so we need to have a good command on the legal language, and apart from that we need to be updated for the latest current affairs, the latest updates in the legal field of 6 months to approximately 1 year. Then comes the second thing is about the study plan. Since we are aware of the
सिलेबस, अब हमें सिलेबस पता है तो अब हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है, एक सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी बनानी है हमारे स्टडी प्लान के लिए, जिसमें हम सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जिसको हम रिवाइज करेंगे, बिकॉज दीज कॉमन सब्जेक्ट्स आर दोज एज आई ऑलरेडी मैंशन विच वी हैव स्टडीड इन आवर LLB और वी हैव स्टडीड फॉर सम ऑफ द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये बहुत कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, किसी में भी आते हैं, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि इंक्लूड करेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, IPC, CPC, Companies Act, Transfer of Property Act, etc. Then important point to be noted over here is that we need to be consistent and updated with the latest legal news. हमें डे टू डे बेसिस पे अपने लीगल करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते रहना है। देन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे जिसके हमें एग्जॉस्टिव रीडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनी है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड एक्ट्स जितनी भी हैं वो आएंगे ही, और हमें उसका एक एग्जॉस्टिव रीडिंग करना है, लाइक इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, IRDA एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एक्सेट्रा. And lastly comes the miscellaneous subjects. We need to read these subjects and acts, and we need to have a fair idea of the important provisions of these acts, like the Right to Information Act, Labor Law, Prevention of Corruption Act, Intellectual Property Right, and so on. आफ्टर वी नो आर सिलेबस, हमें सिलेबस पता है, हमने एक स्टडी प्लान तैयार किया है, हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान किया है, स्ट्रैटेजी रेडी किया है अपने एग्जाम्स के लिए. सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है आफ्टर आवर स्टडीज इज लाइक वी नीड टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट. ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमें अटेम्प्ट करना है एज मेनी एज वी कैन, सो दैट वो हमें एक अच्छी प्रैक्टिस देगा हमारे एग्जाम्स के पहले. एंड वी हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग आवर सब्जेक्ट्स. फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अटैच है, आप उस फॉर्म को फिलअप करें सो दैट हमें पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्प और गाइडेंस यू आर लुकिंग आउट फॉर द एग्जाम, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू द same. You can subscribe to the channel or you can press on the bell icon to stay tuned with the channel. Thank you.